हे गाइस, वेलकम बैक। सिद्धार्थ ने प्रेडिक्ट किया था कि सूर्या के लिए ये मस्त सीरीज होने वाला है। सो उसका क्रेडिट सिद्धार्थ को जाता है। सिद्धार्थ, वेल डन, शाबाश। भाई सिद्धार्थ। क्या भाई एक तीन मैच में कोई बंदा बॉल बैट से टच नहीं हुआ बेचारे के। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं ऐसा 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 करके बैठा था पता है 10 मिनट थर्ड ओडिया में बोल्ड हुआ था वेरी उसका। अनलकी, वेरी अनलकी। सो या कि क्या ही बोलेगा रे, मतलब कुछ ऐसा नहीं, अनलकी नहीं बोल सकते इसको कुछ और ही था ये देख, फर्स्ट टू इनिंग्स का तो क्या बोलते हैं वो, फर्स्ट ओडीआई में वो जो स्टार्क जो स्पेल में था, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स दैट आई हैव सीन। मतलब वो पिच पे इतना मूवमेंट नहीं था। नहीं, फर्स्ट ओडीआई में फर्स्ट वाला बेटर था। सेकंड वाला तो फिर भी अपन थोड़ा मिस्टेक्स किए, बट फर्स्ट वाला आई थॉट उसका जो लाइन एंड लेंथ था, वो जिस तरह से कोहली को परेशान किया पहले, उसके बाद गिल भी ड्रॉप हुआ था और उसके बाद स्काई को बैक टू बैक बॉल्स में उसका स्पेल अनबिलीवेबल था। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। कमिंग बैक टू, ठीक है, सूर्या से ही स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, वेयर डू यू स्टैंड ऑन इंडियाज नंबर 4 स्काई, या अय्यर या संजू सैमसन, जो भी ऑप्शंस है। आई मीन दिस वाज अ pathetic परफॉर्मेंस, बट आई वुड स्टिल स्टिक विद सूर्या। आई थिंक एक्स फैक्टर मेरा वही आर्गुमेंट रहेगा। मतलब आई रियली होप कि वो उसके साथ ना, वो सुरेश रैना जैसा ना हो। इफ यू रिमेंबर, सुरेश रैना वाज प्लेइंग वेरी वेल इन वनडे क्रिकेट इन 2014-15 व्हेन धोनी रिटायर्ड वो सीरीज में। ही हैड जस्ट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन इंग्लैंड इन वन डेज एंड अच्छा लग रहा हम्म। था। देन ही कम्स इनटू द टेस्ट टीम राइट आफ्टर धोनी रिटायर्ड, इफ यू रिमेंबर। हम्म। गोज आउट फॉर टू डक्स। उसमें एक स्टार्क ने लिया था, एक वॉटसन ने लिया था, मेरे को बराबर याद है। और तब से जो भाई की ये हुई है ना, उसको शॉर्ट टेस्ट में बॉल उसका प्रॉब्लम। नहीं, शॉर्ट बॉल तो था ही उसका, पर वो किंग्स पेयर पे गया था। मेरे मेरे को याद नहीं है किंग्स पेयर था कि जीरोस ऑफ मेनी बॉल्स था। बट उसके बाद ही नेवर मेड इट बैक इवन इन वन डेज, जिसमें वो अच्छा था क्योंकि कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, मेरे को ऐसा लगा। तो आई होप समथिंग लाइक दैट डजंट हैपन। हम्म। टेक इट ऑन द चिन एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, कि ठीक है होता है। ऐसा वैसे होता नहीं है, कभी कभी नहीं हुआ है शायद, पर ठीक है हो गया हाँ, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, या आई थिंक कि इसके बेसिस पे ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज, क्या बोलते हैं, ये ऐसा रेयर इवेंट्स है जो शायद उसके किसी के भी करियर में होना बहुत बहुत मुश्किल है। तो यू कांट जज अ प्लेयर ऑफ हिज क्वालिटी बाय जस्ट 3 बॉल्स। तो मेरे हिसाब से, सी, ऑनेस्टली, बिफोर द सीरीज, क्या बोलते हैं, हमारा जो भी हमने लास्ट 12 to 18 मंथ्स में जो ओडीआईस खेला है, उसमें तो हमारा मिडिल ऑर्डर देखेगा, बिकॉज द सीनियर प्लेयर्स वर रेस्टेड, कंसिस्टेड ऑफ अय्यर प्लेड एट 4, अय्यर प्लेड एट 3 or 4, संजू सैमसन प्लेड एट 5 or 6 इन दैट रोल, एंड स्काई उसमें भी ही डिडंट प्ले टू मच। इन एंड आउट, इनकंसिस्टेंट रन्स। हाँ। जैसा राहुल को उसमें छाती से पकड़ के रोहित शर्मा ने खिला है, वैसा इसको नहीं, मतलब कंसिस्टेंट रन ही नहीं मिला है ना हाँ, एग्जैक्टली, सो इसको। और मेरे, पंत को, दोनों को आई फील दे हैव हम्म, बोथ बीन ट्रीटेड अनफेयरली इन दिस सेंस कि ओडीआई क्रिकेट में दे हैवंट गॉट अ लॉन्ग इनफ रन। सो दैट्स व्हाट, तो मेरे हिसाब से तुम किस बेसिस पे स्काई को ओडीआई टीम में ला रहे हो? क्योंकि अगर तुम ओडीआई सेटअप देख रहे हो, तो लास्ट 12 to 18 मंथ्स में तुम्हारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सेकंड बेस्ट कौन था? संजू सैमसन। एटलीस्ट द नंबर्स एंड स्ट्राइक रेट, ऑल ऑफ देम सजेस्ट दैट। तुम स्काई को क्यों लाए ओडीआई फॉर्मेट में? बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी T20 रन्स। तुम स्काई को क्यों लिखे गए T20 टेस्ट स्क्वाड में? बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रॉर्डनरी T20 रन। तो अगर तुम ये कर रहे हो, तो जो अभी नेक्स्ट अपकमिंग बैटर है, तो तुम उसको क्या मैसेज भेज रहे हो कि तू T20 का नंबर 1 बैटर बन गया तो तेरे को बाकी फॉर्मेट्स में भी एंट्री है? तो मेरे हिसाब से वो एक, या एटलीस्ट सिलेक्शन सिलेक्शन कमिटी ओपनली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीजंस देना चाहिए एज टू व्हाई दे हैव सेलेक्टेड पर्टिकुलर प्लेयर्स। तुम सिर्फ एक्स फैक्टर बोल के गायब नहीं हो सकते। वी नो ही इज एन एक्स फैक्टर, वी नो ही इज, क्या बोलते हैं, इफ ही गेट्स अ रन इन, आई स्टिल थिंक ही शुड गेट अ रन इन द ओडीआई स्क्वाड, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो जो प्रोसेस वो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से नॉट फेयर ऑन दी अदर गाइज एज वेल। यू आर राइट, बट हियर आई वुड से कि ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शंस यू नीड, यू नो, आई मीन ऐसा टैलेंट मेरे को नहीं चाहिए कि वो वेस्ट हम्म। करे अपना रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि एट द एंड क्रिकेट है बॉल और बैट का गेम। और जिस तरह से इसका बैट बॉल पे लगता है वो हम्म। दिखता है, मतलब ऐसा लगता तो है कि ये फॉर्मेट एग्नोस्टिक है बंदा।
हर एक में चमकेगा अगर चांस Hmm. मिला तो. But yeah, Hmm. this was a little. It's actually, it might turn out to be a very blip in his career, very big blip in his career, because I don't know. I don't see why I anyone think would keep. he'll recover. He's not the sort of player who will dwell on Yeah, it. in T20s and everything he will, but in Hmm. one days I'm talking about, like. I see. Next, I think we play Asia Cup. If Shreyas Iyer decides to have surgery, then he's going to be ruled out for around 5 to 6 months. So the the only spot that's left in the top 6 or 7 is Shreya, the spot that Sky batted at. And I also wanted to ask you about that. What did you think of Sky batting at 4 twice and then at 6 or 7? Yeah, I think that I know we have criticized this management of not innovating. Like if you remember the semi-final of the T20 World Cup की क्यों Hmm. बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं किया. पर Hmm. इस केस में देयर वाज नो नीड. योर रिक्वायर्ड रन रेट इज अंडर तभी 5 के आसपास होगा मेरे ख्याल से जब कोहली आउट हुआ. कोहली नहीं, कौन आउट हुआ उसके बाद? Rahul. राहुल आउट हुआ. राहुल ऑलरेडी ऑलमोस्ट काफी शॉट्स मार के गॉट इट डाउन टू 5, 5.5 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. देन देयर वाज नो Hmm. नीड. यू कुड हैव Hmm. हैड बिजनेस एज यूजुअल वो आता. Hmm. आई एम प्रीटी श्योर, मतलब अभी ऑफ कोर्स यू कैन इन रेट्रोस्पेक्ट यू कैन बी श्योर, बट आई डिडंट सी द लॉजिक कि वो दो मेरे को दिख रहा है ठीक है वो लेफ्टी को भेजना था करके अक्सर को भेजा, बट उसके बाद पंड्या को क्यों भेजा? I was actually क्या बोलते हैं happy with that move because ये जो नंबर 6 या नंबर 7 पे अगर वो आता है so it's like almost playing in a T20 for him जहाँ he doesn't have to build an innings or anything But he is even if coming you into the T20 after two ducks. hmm, That that context is what I hmm. think they missed. I Maybe they I think thought that the hmm, move was good. because he can attack at the back and Aksar is a lefty, so he can take on Zampa and Agar. अगर But I think from the player standpoint, I think confidence थोड़ा तो कोई भी हो भाई, दो hmm, डक्स और फिर वो थ्रेट की थी. और डक्स भी नहीं, फर्स्ट बॉल डक्स, वो लगता है यार दिल पे देख के लग रहा था तो उसको तो लगा ही होगा. hmm, तो आई थिंक दे मेस्ड इट अप मैन. ही शुड हैव बीन सेंट एज क्विकली एज पॉसिबल कि भाई तू जाए एक रन मार ले जाके पहले. वो बैठा हुआ है डग आउट में कि क्या होगा क्या होगा. और वो, अरे चलो राहुल आउट हुआ बैटिंग यार, नहीं अक्सर जाएगा फिर कोई पंड्या जाएगा. hmm. अब दैट आई फील लाइक इट इंक्रीजेस Do द एंजाइटी इन सच do सिचुएशंस. you think ये जो अय्यर का जो इंजरी एब्सेंस का जो न्यूज़ आया दैट वाज आफ्टर द सेकंड ओडीआई कि इट कुड बी अ लॉन्ग क्या बोलते हैं he wouldn't return till the World Cup probably or anything. So do you think that because of that news that Ayer won't be ready for the World Cup, they thought, okay, what is Surya's best strength? His best strength is he comes out and he just starts scoring runs freely. At 4, it's difficult to do that. And if you have KL Rahul, I don't think that there would be too much of a difference between batting at 4 or 5. And they thought that, okay, if Sky's best strength, we want Sky in the 11 no matter how. So if Sky's best strength, according to us, is at 6 or 7, then we play him at that position. I disagree on that because I don't think in T20 matches he comes towards the death. वो आता है पावर प्ले खत्म होते होते या जस्ट खत्म हुआ हो तब. Then he does what he does. So I don't. I first of all, I think he should have come at 4 the way he was coming before. But I don't see, especially in a chase, you want some solidity at the back. वो भी चेस बड़ा था नहीं, राइट? Hmm. इतना लंबा बैटिंग ऑर्डर लेके बैठे हो तो क्यों क्यों मस्ती करनी है? रिक्वायरमेंट ही नहीं था ना इनोवेशन का. Hmm. अभी तुमको बोला कि बॉल फेंको, तू आके उसके लिए पता नहीं इनोवेशन का पहाड़ क्रिएट करके फिर तू कुछ कर रहा है. भाई बेसिक काम है, बस यही करना है कि जाके बैटिंग कर. I was actually happy with the Akshar Patel move, but ठीक है यार कि हाँ, अटैक करेगा लेफ्टी को, दैट मेड सेंस. that made sense because it would negate the spin twins because they were the only two bowlers who were troubling Indian batters that day. So या that way, I thought it made sense for Akshar Patel's move because, but Hardika, I still thought that if Sky comes in ahead of that would have been better. But still, I think where do you think we lost the series? I think I go. कोहली के वो एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स में भी लॉस्ट द सीरीज आई वुड से. आई मीन व्हेन कोहली इज सेट यू एक्सपेक्ट हिम नॉट टू एटलीस्ट गेट आउट दैट वे. उसने Hmm. फेंका है विकेट, Yeah, टू yeah. बी वेरी फेयर, क्योंकि ऐसा I had a दिस few इज, words to say after. आई नो उसने वो शॉट 2 बार अटेम्प्ट किया है. 2 बार चिप होके वो वन बाउंस गया है वो फील्डर Hmm. को लॉन्ग ऑफ के, और वही शॉट पे आउट होना, दैट्स नॉट कोहली लाइक. Hmm. ऐसा काम
पता नहीं, शायद अफरीदी करता होगा शायद, पर विराट कोहली Yeah, से अपन एक्सपेक्ट Jadeja se I would have expected that करेंगे। given his game awareness. But on a serious note, yeah, I think that we lost this series because of series. No, we lost this match because of Kohli. Because I if won't say because of Kohli, but yeah, he didn't play responsibly, I would say. that was not a see if because see strike rate वगैरह से I have no problems with whatever. He just has to stay at the crease at that point of time. One more over of Agar, and the only bowler who troubled him in his entire innings is out of the way. He can easily milk. He's not like a Hardik or a Jadeja who can't get singles or doubles when the dot ball pressure is building. तो मेरे को तो उस इसमें सेंस ही नहीं बन रहा था वो शॉट में. And I think that he has to take full responsibility for that defeat. Especially he's still India's best ODI batter. He still उसका reputation best chaser ऐसे नहीं बना. क्या बोलते हैं, जीरो गेम अवेयर वो शॉट में उसको ना सिंगल मिलता था उस शॉट से, ना बाउंड्री मिलता था उस शॉट से. तो तू क्यों खेल रहा है वो शॉट? या एटलीस्ट अगेंस्ट द टर्न जाके स्वीप मार. एलबीडब्ल्यू हो गया तो ठीक है, ही वाज टेकिंग द अटैकिंग ऑप्शन. दैट आई कैन क्या बोलते हैं, वो मैं पीसफुली एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ ओके, ही वांटेड टू टेक द गेम ऑन. दैट्स हु इज ऑलवेज बिन. तो फेयर इनफ. बट इसमें कोई सेंस ही नहीं था. दिस मेड जीरो आई सेंस एग्री, पर एट ऑल. आई थिंक इसको तू लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरे को दो बार हुआ हाँ, इससे पहले, उसके बाद तू एग्जैक्टली. तीसरी दिस इज आउट हो जस्ट रहा है। स्टूपिडिटी, हम्म। nothing else. And even in the second ODI was lapse of concentration. He played out Stark. He was 30 of 31 or 31 of 32 or something like that. He was scoring at a fair clip. And as soon as the next bowler comes in, he misses a straight ball, tries to flick it or whatever. So that is वो वाला concentration. पिच में भी देयर वाज सम बाइट, सो आई वुड नॉट, ठीक है वो होता है, पर दिस First वन ODI यू was नो। fine. First ODI, no problem. Excellent delivery, and the setup was brilliant. No problem. But the second and second one, lapse of concentration, okay, even that is fine. It's happening too often now for someone of his, uh, someone who's as good as he is. But even that's fine. But this is absolutely not fine, especially considering क्या बोलते हैं, you just lost Akshar in a run out. That क्या बोलते हैं 50-50 दोनों का गलती था उसमें या whatever. I thought there was no run there till the ball went, but whatever it is, उसके या माइंड में वो भी शायद प्ले होता होगा. I don't know. But I think that this defeat was on to him. Because if he bats for another 10 overs, we win the game easily. If he या bats for another 10 overs, he scores another 20-25, let's say. Even if he at a strike rate of what, 60-70, even that's fine. Sometimes reputation plays a big role. The opponents then think to bowl their best bowlers early. If they get Kohli, they open the game up. They know that. That was his last ploy. Example, why did he bowl Agar 3 consecutive overs? There was Surya after him. There was Jadeja after Sky. So there was batting after them also. But the reputation, if they get him here, they know that they open up the game, and that's exactly what happened, देयर and इज अ he let them happen. स्लाइट डिफरेंस देयर, राइट? वन थिंग इज, कोहली ने जब वो शॉट मारा है, तभी दे ही हैड सूर्या, ही हैड जडेजा टू कम, ही हैड पंड्या प्लेइंग विथ हिम। Hmm. तो मे बी वो भी एक सॉर्ट ऑफ उसको लगा कि आई एम सेटल्ड इन एंड व्हाट नॉट। एक But मिनट, आई थिंक that's a horrible shot. That's a nothing shot. I agree. He got confused and tentative हाँ. shot था वो. But I would just take it back to the lower order. I think even after Kohli got out, चलो सूर्या का हमने बात किया कि horribly he played that third ODI का first ball जो out हुआ, front foot का ball back foot पे जाके It's होता है, just चलो जाने दो. yeah, he's just having that kind But of thing. after that too, Jadeja, he's played for 14 years. Hmm. 14 years he has played for, and what was that? You know, one thing, Akshar Patel, I rate much higher than Jadeja, even though Jadeja का एक 175 है टेस्ट क्रिकेट में, पता नहीं कितने ट्रिपल हंड्रेड्स है डोमेस्टिक में, और एक दो अच्छे ओडीआई में इनिंग्स है, और ऐसा नॉनसेंस सेलिब्रेशन है. स्टिल ही हैज जीरो गेम अवेयरनेस. हाँ. Yeah, even that. See, I have been क्या बोलते हैं, जब भी तो जडेजा की लेता है, I have been praising him. But in terms of his game awareness, yeah, it has been shocking for a while now.
Because even in that, like even after Hardik got out, the last 4 overs are Stark, Stoinis. We spoke about this off air, but Stoinis had 2 overs. शमी मार रहा था स्टॉइनिस को. एग्जैक्टली exactly, भाई. शमी. मेरे को एक सेकंड, मेरे को पता था शमी आउट होने वाला है अभी, पर आई वाज हाँ, लाइक अगर इसके साथ एक बैट्समैन होता. एग्जैक्टली. So if Jadeja plays out, Zampa scores 6 runs or whatever, 6 or 7 runs. चल आई चार डोंट इवन पांच भी वांट ले हिम ले. टू प्ले आउट. आई एम फाइन विद हिम टेकिंग हिम ऑन, बट आई हैव सीन दिस वे टू ऑफन बहुत कि कोई गलत एक्स बॉल प्लेयर पे करना वो गलत उसकी बॉल पे. हैबिट है. भाई क्लियर ठीक है, जैम्पा इज नॉट नो रशीद खान की तुमको दिख नहीं रहा है कि वो क्या डाल रहा है. आई एम प्रीटी श्योर ही पिक्ड इट की गूगली है, फिर भी ही इज गोइंग थ्रू विद द शॉट. दैट इज व्हाट इज अनोइंग और मी. एटलीस्ट कट मारने जा, वो कुछ डायरेक्शन में कर ही भाई, मारने. तू रोक दे बॉल को. वहां वहां मिड विकेट जा रहा है वो बॉल को. भाई टर्निंग पिच है, तू पिच पे पहुंचा नहीं है बॉल के, हाँ. तेरे से दूर जा रही है बॉल. तू एक एक तो ही डजंट चार्ज डाउन द ग्राउंड, ही चार्जेस डाउन द लेग साइड. इफ यू सी, हाँ. लेग साइड के बाहर आता है और फिर घुमाता है, उसका वो स्विंग है. तो हम्म. ऑलरेडी तू वाइडर बॉल्स को तो तू नहीं मार सकता है. तो दिस इज गोइंग अवे, यू हैव टू जस्ट ब्लॉक इट आउट. दैट गेम अवेयरनेस इज व्हाट रियली इरिटेटेड मी. आई वाज लाइक ठीक है यार भाई, मतलब कोई नया प्लेयर नहीं है ये अभी. Yeah, 14 absolutely. I years is a agree. long time. He started with Kohli. I think we cut him too much slack just because he bowls as well. But Yeah, anyways, I definitely agree that there are certain things that our batters need to improve on. I think that someone like Hardik and Jadeja, because their uh, hitting game, the boundary, how well they get boundaries, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कभी कभी डॉट बॉल में हो जाता है. जडेजा कहाँ बाउंड्री मारता है भाई, नहीं, कहाँ मारा. that's his strength now, whatever we have to assume. But you see, in a chase, क्या बोलते हैं, we have to keep getting singles and doubles. और अगर वो नहीं आते, अगर बाउंड्री बॉल नहीं आ रहे हैं, तो हमारे बैटर्स लॉक्ड अप हो जाते हैं. And Hardik and Jadeja, I think Hardik, we have spoken about this as well. वो single double को he doesn't. अगर if there is a 60-40 chance of a single, he doesn't take it. He'll be like, नहीं नहीं नहीं, no run. he's become too मैं नहीं तो कौन बे टाइप का आदमी, विराट कोहली को कौन ना बोलता है भाई कि मैं नहीं हाँ, भागूंगा. and Kohli was running at the danger end as well. See, whatever it is, I think that this series, I'm happy that we lost this series because they have a few questions to answer इंटरनेशनल. now. I think they have a few questions to answer now, and the क्या बोलते हैं उनका जो वीकनेस है, वो आई थिंक ये गेम में परफेक्टली हाईलाइट हुआ. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद रोहित शर्मा. He wants to play a certain brand of cricket, which I'm completely okay with if he's batting first. But he has 30 ODI hundreds. I don't know too many batters who have 30 ODI hundreds. I think there are probably two or three in the history of the game who have 30 ODI hundreds, which means that he's good enough to get those big hundreds and take the team home. When you're going at 9 runs per over in a run chase, what is the need to play the shot that he played? If there's no fielder there, then fair enough. But every team keeps the fielder there for a pull shot, and this is the third or fourth time in the last 6 ODIs that he has gotten out in the same manner. So आई थिंक ईगो पे आ रहा है, तू छोड़ दे बॉल को यार. व्हाट इज द प्रॉब्लम. no, play it along the ground. Play it along. His pull shot is the best in the world. He can control his pull shot whenever he wants to. He scored 14 runs in the previous over of Zampa. क्या जरूरत है इसका? क्या जरूरत है इसका? मतलब सेंस ही नहीं बनता है. Yeah, I agree. But yeah, even the brand of cricket, वो सब talk positive cricket, ये सब I don't understand, man. When the ball is there to be hit, the situation demands for it, you hit it. इसमें positive brand of cricket, all that rubbish. वो मेरे को तो पोस्ट मैच का भाई सुन के अभी इरिटेट हो गया हूँ मैं कि वी आर प्लेइंग पॉजिटिव, ये वो, वी हैव गिवन लाइसेंस टू प्लेयर्स. अरे भाई काय का लाइसेंस है, फ्री हो गया तुम कि वी प्ले ऐसे ही. भाई देखो स्कोर बोर्ड, देखो बॉल, देखो फिर मारो. तो और इसमें आई थिंक आई मिस धोनी काइंड ऑफ माइंड अ लॉट. मतलब उसका जैसा दिमाग था, वो इतना प्रैग्मेटिक था बंदा कि अगर बॉल है भी, फुल टॉस भी है, पर अगर सिचुएशन डिमांड नहीं कर रहा है कि अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो नहीं लेगा हूँ. You need some players who play like what Rohit is playing right now, but you also need a parallel of solidity. One is Virat Kohli. Little bit of it was Rahul, but the way he got out yesterday was again questionable. But ठीक है, वो attacking instinct, I don't mind that.
Hmm. But I was more disappointed with the lower middle order not being able to finish, because I've seen this a lot now कि आते हैं नजदीक आते हैं, अच्छा खेल रहा है, नहीं नहीं खत्म नहीं कर पाए. So that needs And to. Kohli and Rohit have been chasing down totals for more than a decade now. So if even if now after they get out we are like, oh, ab nahi ho payega, then there's something wrong. So Yeah, so see, Rohit, I'm only saying this because I know how good a batter he is. How many times he has finished off run chases for us. He was 30 of 17 when he got out. If he plays it along the ground, if he then okay, he has gotten the start that he wants. Power play he wanted to maximize. No problem. Power play maximize ho gaya. Now they have fielders on the boundary for his big shots. So now what he has to do now, if he for his next 40 runs, if he takes 50 balls also, he gets what 70 of some 60-65 balls, and on when you're chasing 270, you've literally that's the killed the game. game there. Yeah, you killed the And game I there. think उसमें patience का ही हो गया, because if you see Rohit Sharma classic hundreds, right, none of them have come like that कि मार मार के लाया वो. Hmm. Everyone is built, right? Just the way Kohli does. He maybe attacks a little more initially than Kohli might because power play. But Hmm. उसके बाद it's all like head down singles Hmm. here, there, gap में force. Yeah, I now haven't he seen has that kind taken of that ultra approach. aggressive approach, which is fine if you're batting first, it's Batting, a belter of exactly. a Exactly. wicket, wagera wagera, then fair enough. But not when you're chasing 270, and it wasn't an easy pitch to bat on. By no means was it easy. So, and we got the start that we were what, it's 6-7 overs, some 57 or for no loss or something like that. Yeah, yeah. We could have killed the game there in the next 5 or 6 overs itself. If for in 12 overs we are 75 for no loss, we are almost there. Like unless a collapse happens where we lose 5 or 6, and then you have Kohli coming after you. So I don't know, man. That shot didn't make sense to me. And we spoke about Rohit, we spoke about Kohli. I want to talk about Gill as well. So I have seen that वो जब inning start करता है ना, he starts as if he starts from where he left off his previous innings. वो Huh. ऐसा, if you have noticed, वो न्यू बॉल को ऐसा देखता है कि oh I've been playing so well, let me take it on. वो जो 2-3 ओवर का जो स्पेल जरा सा रुकना होता है ना, वो नहीं करता. If you see a Kohli, even if he has got 200 in his previous match, वो आते ही क्या बोलते हैं, वो फर्स्ट 5-6-7-10 बॉल्स जो है वो कॉशियसली खेलता है. वो गिल का वो मैंने देखा है कि वो नहीं, वो ही जस्ट वांट्स टू टेक टेक द बॉलर ऑन, व्हिच इज फाइन. बट स्टार्क अभी when Stark has his tail up, you have to respect the bowler. Yeah, I think he will, but गिल का मेरे को लगता है कि वो he will, it will pick up. मतलब I don't see ऐसा pattern or anything. हाँ ठीक है, he हाँ got up their ways to Stark, but it's fine. I think it's in the bigger picture. He's, I हाँ, think, in going the to be. bigger picture, that's what he see. Even I don't think in this full strength side hasn't chased down. We were discussing they haven't chased down a 250, 260 plus total for a very long time now, for 3 years almost now. Yeah, three almost two. years now. So, क्या बोलते हैं, this was a blessing in disguise that, okay, we were probably the best chasing side for almost a decade, but still, we still have to chase down targets again to get into that kind of zone as well, because we haven't chased 260 plus in 3 years. So, it's a good thing that this happened. And I think that क्या बोलते हैं, there are certain things. It's not too big. I think I thought it was a overall very good series with bat and ball. Oh yeah, there's a क्या बोलते हैं, huge discussion that India can't play uh, fast bowling when the pitch is seaming and stuff. Where do you stand on that? Rubbish. इसमें क्या? मतलब, of course, man. Sometimes some teams will get blown away with seam when Hmm. bowlers have their tail up. थोड़ा है pitch में, it's not a big deal. Uh, Yeah, I same. mean, I absolutely agree with it. That's why I was going to ask. I thought ठीक है, कुछ disagreement होता है क्या, देखते हैं यहाँ पे. But आई we are थिंक on the अपने same में page here. क्वालिटी तो बहुत है यार. ऐसा नहीं है कि कोई भी एक भी टाइप का पिच अपने को ऐसा कि अरे इस पे तो खेल ही नहीं सकते. बाउंस हो, स्पिन हो, स्विंग हो, थिंक वी कैन मैनेज. आई थिंक उस सेकंड मैच में मे बी द माइंडसेट वाज कि अरे अटैक करना है ज्यादा. Because the pitch बेल्टर सब was बोल रहे, बेल्टर है, hmm. ये है, वो है. तो And दैट आई थिंक. if you see the wickets,
Gill threw his wicket away. Rohit threw his wicket away. Kohli threw his wicket away. Surya got a beauty. Rahul got a beauty. Rahul's was probably the best one because it swung so late. And so in your top, if your top three are throwing wickets away and not getting out to like, I don't, I don't think they were even good balls. They were, क्या बोलते हैं? They just wanted to go for runs, that balls. So and क्या बोलते हैं? These sort of things happen. Like, well, this is a once. When was the last time we got bowled out for 100, in an ODI? So I think होता है this, एग्जैक्टली दैट्स या and this left arm seems a problem. How many batters would have, क्या बोलते हैं, the way Stark was bowling that day, how many batters would have been able to survive that spell? We यार रोहित का मेरे को वो एक पैटर्न थोड़ा दिखता है लेफ्ट आर्म सीमर्स के hmm. अगेंस्ट, बट आई थिंक लार्जली ऑफ लेट नहीं दिखा है वो टेस्ट हाँ, मैचेस में if you see this guy Sky का तो टेक्निक देखेगा, आई थिंक वैसा ही होता था उसका पहले। हाँ, if you see his technique कि T20 जो ओपन स्टांस होता है, वो ओपन स्टांस की वजह से बॉल जब अंदर आ जाता है, आई थिंक सुनील गावस्कर वाज एक्सप्लेनिंग इट ऑन एयर, ही वाज एक्सप्लेनिंग इट वेरी नाइस कि जब वो ओपन स्टांस रहता है तो बॉल जब अंदर आ जाता, क्योंकि वो फुल क्या बोलते हैं T20 मोड में कहाँ फुल एक्सेस करने को देखता है ना, तो वही अगर स्टांस यहाँ पे भी रखा तो इन जब बॉल अंदर आता है तो ही विल बी इन ट्रबल, ही विल बी कॉट, और दोनों इनिंग्स में वही हुआ. But yeah, I don't think it's too much of an issue. See, are you telling me that Hazelwood या Cummins होते थे जब बॉल स्विंग हो रहा है तो हमें परेशानी नहीं होता? Of course, good bowlers will trouble you on, क्या बोलते हैं? When the ball is doing things, good bowlers will trouble you. And क्या एग्जैक्टली आई बोलते हैं? मीन तुम्हें बॉलर्स कैन विन समटाइम्स वैसा। हाँ, exactly. You have to, क्या बोलते हैं? Our ODI batters have scored what, 20,000 plus runs. ऐसे ही नहीं बने. तो of course they या थोड़ा लग चाहिए बीट होने का वगैरह वगैरह. And that's about it. I don't think we have to read too much into it. But if Iyer is not there, then the World Test Championship Final 11 becomes very interesting. We'll get into that soon. And before that, we have 2 months of entertainment where we can chill and enjoy. It's IPL time soon. उसका भी हम करेंगे कुछ ना कुछ. Uh, तो सिद्धार्थ, thanks for joining. एनी टाइम।